countries, Denmark, Norway, and Sweden. I told you why they are called Scandinavian. Then we discussed about Finland. And there is Gulf of Bothnia between Sweden and Finland. There is Baltic Sea here, and there are three countries which are called Baltic nations. One is Estonia here, then there is Latvia, and then there is Lithuania, right? This few important points we had discussed in our yesterday's lecture. Okay, then I show you this particular former USSR country block, right? This also we discussed. Then yes, then we discussed वर्ल्ड कोकोनट डे, है ना? सो हमने कोकोनट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे थे, उसके क्या क्या फायदे होते हैं वो भी देखा था, राइट? It is observed on September 2 that we had discussed, and the objective is to create awareness across the globe about the importance of coconut and its benefits. Okay, the benefits that we discussed yesterday, right? This was first celebrated in the year 2009, and the theme of this year is invest in coconut to save the world. Is that clear? So this theme you must remember because every year there is at least one question. There might be two questions as well on the days. Okay? So this is what we had discussed yesterday. Then we had discussed India-Nigeria relations. Okay, and I showed you this map of Nigeria, and we had also discussed that Nigeria is not a landlocked country. Okay, and equator doesn't pass through the Nigeria. Equator doesn't pass through Nigeria. This one thing you have to remember. Then I told you here that Mediterranean Sea is located between Europe and Africa, and the Red Sea is there between Asia and Africa. Okay, these two important things we discussed. Then here, okay, now we will discuss the important and next important news of today's lecture. Okay, is that clear? Everything well revised? Are you there with me? Are you there with me? Yes. Okay, let's start then. So global innovation index. Okay, so global innovation index. See, recently this global innovation index has been published, and very important point for you examination point of view is that who publishes this global innovation index. Okay, see, before I tell you what is this index and what India's rank is, before that before that let me tell you few things. That innovation कोई मुझे innovation का मतलब बताएगा चैट बॉक्स में? What is called innovation? Very quick. Innovation. Okay, discovery. Okay, invention. Okay, great. Shreyas, Ashish, good. New ideas. Very good, Ashish. Something new. Very good. So yes, creating something new, which is new, the invention, the discovery, right? This is we call a innovation. See, innovation is widely recognized as a central driver of economic growth and development for any country. You know why innovation is a driver of economic growth? Because if a country is investing in its research and development, the more productivity it will have in its economic progress. Like China, for example, China, Israel, United States, Germany, Japan, all these developed and advanced countries. So though China is not a developed or advanced, it is a developing country, but it has invested immensely in its research and development and its innovation. Okay, so innovation से होता क्या है फिर कि देखो कोई नई चीज अगर बनानी है आपको, आप अगर आज मार्केट में जाकर देखोगे तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी जो आप आपके घर में या आपके डेली लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपको मच्छर मारने की बैट देख लो, ठीक है? आप कल तक हाथ से मच्छर मारते थे, अभी आराम से आप वो बैट से मच्छर मार लेते हो.
तो ये कैसे हुआ? ये एक न्यू आइडिया थी, ये एक नया इनोवेशन था, ठीक है, जो आज हर घर में वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट हर घर में आपको बैट मिलेगी, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यू आइडियाज, है ना। एंड when a country invest in its innovation, then it is largely benefited from it economically. अब देखो, आप अगर चाइना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और वो बैट अभी इतनी बेचे जा रही है, इतना उसका मार्केटिंग है, तो डेफिनेटली चाइना को इकोनॉमिकली उसका बेनिफिट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इनोवेशन में इन्वेस्ट करना, इनोवेटिव आइडियाज को ब्रिंग लाना, ये एक ड्राइवर माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको मेरी जो पहली लाइन बताया था कि इनोवेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड as a central driver of economic growth and development. Is that clear now? Why I said that? ठीक है, सो इनोवेशन का ये इंपॉर्टेंस है। नाउ कौन सी कंट्री कितना बेहतर कर रही है इनोवेशन पर, इसका ये एक रैंकिंग आता है हर साल, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ओके, सो बेसिकली दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स provides a detailed metrics about the innovation performance of 131 countries and economies around the world. ठीक है, समझ में आ गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का काम क्या है? यस, एग्जैक्टली, फाइन। नाउ the next important point about this particular news is, especially from your exam point of view, is that who publishes or who prepares this particular global innovation index. This is most likely that the question can come like this: the global innovation index is prepared and published by which of the following organization? ठीक है, so in that case you must remember this global innovation index is released jointly by 3 organizations. One is World Intellectual Property Organization, then the second is Cornell University. The Cornell University is in United States, in New York. Okay, याद रखना, Cornell University is in New York, United States. And the third is INSEAD Business School. Okay, and this INSEAD Business School is one of the premier business school in the world, which is in France. Okay, it also has its branches in various other countries like Italy, Abu Dhabi and all, but mainly it belongs to the France. Is that clear? So these 3 organizations cumulatively or jointly publishes this particular global innovation index. See, अभी यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि who among the following is not involved in publishing or preparing the global innovation index. और आपको ये 3 ऑप्शन होंगे उसमें, और एक चौथा कोई ऑड होगा, and you have to find out that odd man out. Is that clear? So इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो रिसेंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हुई है 2020 में, उसमें इंडिया का रैंक जो है ये 48 है, ठीक है, आउट ऑफ 131 कंट्रीज। सो आउट ऑफ 131 कंट्रीज इंडियाज रैंक इज 48, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 50 कंट्रीज। ओके, so this has happened for the first time that India has been ranked in the top 50 countries. Okay, so आशीष ने सवाल पूछा है कि कब रिलीज हुआ। See आशीष, we are discussing the current affairs of the month September. Okay, so everything we are discussing in this recent times, it is from September itself. Okay, okay, good. Is that clear? सितंबर 2020 में ये रिलीज हुआ है, ठीक है, सितंबर 2020 में ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सब क्लियर है? सो फर्स्ट टाइम इंडिया हैज रैंक्ड among top 50 countries, and the top 5 ranking countries are Switzerland, Sweden, US, UK and Netherlands. If you observe here, all the countries are advanced countries. Okay, why? Because if you are an advanced country, you have many resources to invest in your innovation or in your research and development, and vice versa. If you invest in your research and development, there are chances that you might become advanced or developed country. Okay, and there is another way of it, that if you are a developed country, you have ample resources to invest in the research and development or the innovation. Is that clear?
सो जितने भी टॉप कंट्रीज आते हैं, टॉप 10 पोजीशन, देखो यहाँ पर बोला भी हुआ है मैंने, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है that top 10 positions are dominated by the high income countries. इसकी वजह क्या है? Just now I told you, right? समझ में आ गया ये सारा मामला? क्लियर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, कौन पब्लिश करता है, इनोवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और इंडिया का रैंक क्या है, और टॉप 5 कंट्रीज कौन से है? समझ में आ गया सब? स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? इज एवरीथिंग क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन देन. India attends key meetings of BIMSTEC. ठीक है? Now this is the another important news that India attends a key meeting of BIMSTEC. Okay? Now BIMSTEC. What is mean by BIMSTEC? सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज में ये क्यों था, सितंबर में ऐसा क्या हुआ है जो ये न्यूज में आया है वो बताता हूँ. That India has recently attended a meeting of BIMSTEC which discussed the ways to further expand the cooperation among its member nations to effectively deal with the key challenges, key contemporary challenges, okay, like terrorism, economic slowdown, or coronavirus. Okay, all these challenges have been discussed in this particular BIMSTEC meeting, which was held in the September 2020. It means in the last month itself. Okay, now what is BIMSTEC? So basically BIMSTEC is a multi-sectoral technical and economic cooperation group. BIMSTEC का मैंने आपको अभी full form बताया. What is the full form of BIMSTEC? It is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ठीक है, अब इसके नाम पे ही है कि ये मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन ग्रुप है. ठीक है, so it was held online, of course. So majority of the meetings in past 4 to 5 months were held online only. Okay, it was a virtual meeting definitely. Okay, chalo. So it is a multi-sectoral technical and economic cooperation. Okay, now the countries in the BIMSTEC group, they meet yearly basis or 2 yearly basis. Okay, and they discuss the very pressing issues of the entire region. Now which region they are talking about? They are talking about the Bay of Bengal region. Okay, so if you see the countries in which belongs to this BIMSTEC group, they are the littoral states of the Bay of Bengal. They are the littoral states of the Bay of Bengal. It means they see उन सबका कोस्ट लाइन जो है, उन सबका कोस्ट लाइन वो सारे बे ऑफ बंगाल पे आएगा सबका. ठीक है, सो ऐसा इसका मीनिंग होता है. बट हाउएवर नेपाल ऐसा कंट्री है इसमें जो बे ऑफ बंगाल में ओपन नहीं होता. ठीक है, बट स्टिल इट इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे कंफ्यूजन मत कर लेना. अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ बे ऑफ BIMSTEC opens into the Bay of Bengal, so that statement would be wrong, because Nepal is the country which does not open into the Bay of Bengal and it is still a part of BIMSTEC. Is that clear? चलो, so this BIMSTEC group के अभी members कौन कौन से मैं बताता हूँ. It has total 7 members. The BIMSTEC group has total 7 members, 5 deriving from South Asia like Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka. These 5 are from South Asia and the other 2 are from Southeast Asia, which those 2 countries are, it is Myanmar and Thailand. Okay, so ये याद रहेगा आपके कि कौन से 7 कंट्रीज है BIMSTEC में. याद रखना, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार एंड थाईलैंड. देखो BBIN याद रखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ एक आपको, BBIN. ठीक है, so this BBIN is very important. BBIN is common in many groups. Okay, so BBIN you must remember: Bangladesh, Bhutan, India and Nepal. BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल. अगर BBIN देखोगे तो ये BBIN सार्क में भी है. सार्क जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, सार्क ग्रुप जो है,
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सो मैं सार्क के बारे में भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी याद रखो कि सार्क में और बिम्स्टेक में ये बीबीआईएन कॉमन है। सो ये बीबीआईएन सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है। तो यहाँ पर आपका 4 कंट्रीज तो आपके दिमाग में फाइनल रह गई, है ना, कि ये बीबीआईएन जो है सर, कि ये तो सार्क में भी है और ये बिम्स्टेक में भी है ही है। बीबीआईएन याद रहेगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पहले बीबीआईएन तो याद रखो। अब ये बीबीआईएन में आपको ऐड करना है, जब आप बिम्स्टेक की बात करते हो, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ओके। SMT, बीबीआईएन SMT, बीबीआईएन SMT, ये है बिम्स्टेक के कंट्रीज। बीबीआईएन मीन्स भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। याद रहेंगे ये 7 कंट्रीज। बीबीआईएन SMT, बीबीआईएन SMT, बीबीआईएन SMT, इसको रट डालो, ठीक है। और ये है बिम्स्टेक कंट्रीज का ग्रुप। Now the next important point about this BIMSTEC group is, see BIMSTEC हमेशा न्यूज में रहता है, तो इस पर कुछ चांसेस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल आते हैं काफी बार, ठीक है। Now this organization came into being in 1997. So this organization is came into being in 1997 through Bangkok Declaration. So there could be a question of this nature, that which among the following organization came through the Bangkok Declaration, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आया था? और आपको ऑप्शन में होगा बिम्स्टेक, सार्क, कॉमनवेल्थ या फिर नॉन अलाइन मूवमेंट, ऐसे ऑप्शन हो गया। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई दैट टाइम दैट बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आया था बिम्स्टेक इन 1997। या फिर आपको ऐसे भी पूछा सकता है कि इसमें से ओल्डर कौन सा है, नया कौन सा है। तो इसीलिए इस ऐसे केस में आपको ईयर जानना जरूरी होता है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। सी नॉर्मल जानकारी देखो इसकी, बहुत ज्यादा इसको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। आपने इसको 2 बार भी पढ़ लिया कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से आया था, और एक बार उसको रिवाइज कर लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, तो भी आपके दिमाग में रह जाएगा। इज दैट क्लियर? और बिम्स्टेक का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ढाका में, बांग्लादेश, ओके। सो द परमानेंट सेक्रेटेरिएट और द हेडक्वार्टर ऑफ द बिम्स्टेक इज इन ढाका, which is in Bangladesh. Is everything clear now? बिम्स्टेक सबको पता है। सी अब आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर ये फिर ये ग्रुपिंग्स का काम क्या होता है ना, ये ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? देखो ग्रुप्स जो है ये रीजनल ग्रुप है बेसिकली। कुछ ग्रुप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक टर्म होते हैं, है ना। इकोनॉमिक ग्रुप होगा जिसमें दुनिया के एडवांस कंट्री होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन, है ना। फिर वो अफ्रीका से बिलोंग करता होगा, यूरोप से बिलोंग करता होगा, अमेरिका से बिलोंग करता होगा, उनका पर्पस मेनली इकोनॉमिक होता है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं और कुछ रीजनल ग्रुप होते हैं। रीजनल ग्रुप जैसे बिम्स्टेक और सार्क है। सार्क की अगर बात करें तो सार्क एक साउथ एशियन रीजनल ग्रुप है। बिम्स्टेक भी एक साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ग्रुप है, ठीक है। सो उस रीजन में जितने भी कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती है सारे कंट्रीज के लिए, ठीक है, वो कंट्रीज वो सारे कॉमन इंटरेस्ट की बातों को वहां पर डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के रिजोल्यूशन लाते हैं, और ये उनका फायदा होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करे और अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको हेल्प की जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली बिम्स्टेक या फिर किसी भी रीजनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस होता है, in order to help enhance cooperation on the common areas of interest. Is that clear? Like terrorism have affected many countries in the world, and so has affected the South Asian countries. Like if you see Sri Lanka, if you see India, if you see Bangladesh, they Myanmar, they all are affected by terrorism, or they are all are affected by insurgency, right? So in that areas, the countries in the group can help each other, enhance their cooperation, okay. They can share intelligence and help each other in order to solve the problems of terrorism or insurgency or any other problem like novel coronavirus. Is that clear? So that is why we have the regional groups or economic groups or the political groups in the geopolitical scenario. Is that clear? समझ में आ गया सभी को? फाइन, चलो देन।
ये है मैप। अब ये मैप जो है ना सार्क कंट्रीज का है, ठीक है। दिस मैप इज स्पेशली ऑफ सार्क कंट्रीज, ठीक है। इन सार्क you have 8 members, and in BIMSTEC how many members you have? How many members do you have in BIMSTEC? Very good. Just now I told you it has 7 members. Okay. Now I'm just giving you a raw comparison between SARC and BIMSTEC as long as its member countries are concerned. Okay. We will discuss SARC in detail any other day, but however, as of now, just I'm giving you the brief or the raw comparison between the SARC and BIMSTEC as long as its member countries are concerned. Okay. Now, as I told you, BBIN. Okay. So BBIN is common between SARC and BIMSTEC. Okay. And now in case of BIMSTEC, what I told you, in case of BIMSTEC, what I told you, BIMSTEC, then Sri Lanka, then Myanmar, and then Thailand. So BBIN SMT. This is about BIMSTEC. Now what about SARC then? What about SARC then? SARC maybe BBIN is common. BBIN is common, but there is no Southeast Asian country. It means there is no Myanmar and there is no Thailand in SARC. ओके सो देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि बिम्स्टेक में जो है बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आपको म्यांमार भी मिलेगा और थाईलैंड भी मिलेगा, है ना। ये जो कि दोनों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और बे ऑफ बंगाल में ओपन होती है। मगर आपको सार्क में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नहीं मिलेंगे। सार्क में कंप्लीटली जो है साउथ एशियन कंट्रीज है सिर्फ, ठीक है। सो इसीलिए म्यांमार और थाईलैंड जो है सार्क में नहीं होगा, ठीक है। तो अब उसकी जगह फिर कौन से 3 कंट्रीज हो गए बीबीआईएन के अलावा? तो उसमें होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका इसमें भी है, श्रीलंका इसमें भी है, बीबीआईएन में भी है और सार्क में भी है। श्रीलंका के अलावा है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड मालदीव्स, ठीक है। समझ में आ गया? बीबीआईएन एसएपीएम, बीबीआईएन एसएमटी, ठीक है। सो BBINS और BBINS यहाँ पर भी जो है कॉमन है। सिर्फ यहाँ पर 2 कंट्रीज एक्स्ट्रा है बिम्स्टेक में साउथ ईस्ट एशियन, जो है म्यांमार और थाईलैंड, जो कि इसमें नहीं है म्यांमार और थाईलैंड। इसके जगह पे कौन से 3 कंट्री है यहाँ पर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। समझ में आ गया बच्चों? एक रॉ कंपैरिजन। जहां तक मेंबर्स की बात है, सार्क में कंप्लीटली साउथ एशियन कंट्रीज है, वेयरएज बिम्स्टेक में साउथ एशियन और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है, ठीक है। सो बिम्स्टेक में से म्यांमार और थाईलैंड को हटा दो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डाल दो, आपको सार्क मिल जाएगा अलॉन्ग विथ मालदीव्स। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी आपको? अगर मेंबर आइडेंटिफाई करने हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से कंट्रीज सार्क में है और बिम्स्टेक में नहीं है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से कंट्रीज सार्क में भी नहीं है या बिम्स्टेक में भी नहीं है, या फिर इनमें से कौन से कंट्रीज दोनों सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपके पास अगर ये टर्मिनोलॉजी या फिर ये एनोलॉजी है, देन यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ दैट नेचर। इज दैट क्लियर नाउ? चलो इसको हम फिर से आपके एग्जाम के पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर अगर हमें कभी सार्क पढ़ना हो तो फिर से एक बार इसको ऐसे रिवाइज कर लेंगे, ताकि वो एक बार और काफी क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। काफी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है इसमें। फाइन, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट। ओके, सो वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट, सो वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी ब्रॉड टर्म। अगर आपको पूछा जाए कि वाटर हीरोज कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट जो है ये किससे रिलेटेड चीज है ना, तो वाटर के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन अगर आपको डाला दे जाएगा, ये वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड है या फिर वाटर क्वालिटी के रिलेटेड है
या ड्रिंकिंग वाटर के रिलेटेड है या फिर ग्राउंड वाटर के रिलेटेड है, आपको कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज बताना जरूरी समझा कि अगर आपको पूछा जाता है कि वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, then in that case you must remember it is about the conservation and management of water, ठीक है। it is about conservation and management of water. Is that clear? समझ में आ गया? And this is a you know, this contest is about uh, yes, as I told you, it is about conservation and management, but this project belongs to the Department of Water Resources in Ministry of Jal Shakti. Who is our Jal Shakti minister? Who is our Jal Shakti minister currently? काफी न्यूज में भी थे वो. Who is our current Jal Shakti minister? इतना टाइम तो गूगल करके भी देने में नहीं लगना चाहिए. हाँ, वेरी गुड, गजेंद्र सिंह शेखावत. Okay, so Gajendra Singh Shekhawat is our Minister of Jal Shakti. Is that clear? So Ministry of Jal Shakti has launched this particular Water Heroes contest. In this contest, people will share their stories from September. People will share their stories about their conservation and management of their water resources. Okay. Now, why this has been launched? Because the water ministry wants to make water conservation a people's movement. Okay. Why there is a focus on people's movement? Because if anything comes from the people, it has its positive effect on a larger scale. Okay. If it is coming from above and imposed upon people, it has not that kind of intensity or that kind of results, that kind of positive results. But however, it is from when it is from people, when it is people's movement, then you will definitely find a large and positive impact over any policy or any program. Is that clear? समझ में आ गया? सो इसीलिए याद रखो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन पूछे जाने जैसा, बस एक यू नेवर नो कि अगर आ जाता है क्वेश्चन तो ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि वाटर हीरो कॉन्टेस्ट क्या है. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड फ्रॉम विच मिनिस्ट्री, इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. बस इतना याद रखो, बाकी इसमें इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है. ओके, मूव ऑन. Our next important news item is G20 foreign ministers meet. Okay, now I am going to tell you what is G20. So we will also deal with the group of 20. G20 means group of 20. कौन से 20 कंट्रीज G20 में आते हैं, कौन से नहीं आते, इंडिया इसमें आता है नहीं आता है, इसका करंट चेयर कौन है, इसके क्या मकसद है, what all purpose does this G20 groups have, all this we will discuss. Don't worry about it. So अभी recently हुआ क्या है, why it is in news, why is it in news? It is in news in September last month. Okay.